था ना वीना जी। हाँ जी, प्लीज um, गा दो, 2-4 लाइनें गा के हमको सुना दो। उनके गाने वैसे भी there's so much variety and so many languages, and you know, she sang with such passion, I would say, all the songs, and her voice was so unique, you know, nobody can be like her. Can you hear me, Nupur? So she'll be back in a moment. I'm gonna go back to Zoom, and we'll see each other in a moment. Okay. Yeah. So we are waiting for you, Nupur. Kya chale gaye? No, I'm here, Veena ji. I don't know what happened. The minute it went to live stream, it kicked me out. आप शेयर कर रहे थे मेरे ख्याल में भी, that's why. नहीं मैंने कुछ नहीं किया, जैसे वो लाइव स्ट्रीमिंग पे गया तो उसने मुझे किक आउट कर दिया। Anyway, हो सकता है जूम लता मंगेशकर का फैन ना हो, लेकिन हम तो हैं। उनके कुछ आइकॉनिक गाने हैं जो हम कभी भी नहीं भूल सकते। और अभी हम यही बात कर रहे थे कि 1 साल गुजर चुका है, लेकिन लगता नहीं है कि 1 साल गुजर चुका है। एक्चुअली ये भी नहीं लगता कि वो जा चुकी हैं, क्योंकि शी कंटिन्यूज टू लिव विद ऑल ऑफ अस थ्रू हर म्यूजिक। इतने बेशुमार गाने दिए हैं उन्होंने कि अगर हम हर रोज एक नया गाना सुने लता मंगेशकर, तब भी पूरे साल में खत्म नहीं होगा। तो मैं हमेशा यही उनके वो गाना याद करती हूँ जिसमें वो कहती है ना रहे हम महका करेंगे। और वाकई में उनके गानों की महक, उनके सुरों की महक जो है, आई थिंक जब तक ह्यूमैनिटी जिंदा रहेगी तब तक कहीं ना कहीं किसी ना किसी दिन कोई ना कोई लता मंगेशकर का गाना किसी पल सुन रहा होगा। बिल्कुल। और जब आप खाना बनाते हैं, आप अच्छे गाने सुनिए तो वाकई में आपके खाने का जो जायका है, उसकी जो टेस्ट है, जो एनर्जी आप उसके अंदर डालते हैं, वो बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है। एंड यू विल नो दैट कि जब आप खाना बनाते हैं कंपेयर्ड टू जब आप रेस्टोरेंट्स में खाना खाते हैं, उसकी एनर्जी कंप्लीटली डिफरेंट होती है। घर के दाल चावल भी बहुत अच्छे लगते हैं और रेस्टोरेंट में इतने मसाले डालने के बाद भी कहीं मुश्किल से टेस्ट आती है, राइट? हम भी आज गाना गाएंगे और अपना डिजर्ट बनाएंगे। वैलेंटाइन डे का डिजर्ट बनाएंगे। वैलेंटाइन का नूपुर आई स्पेशली, एंड देन आई वांट टू वेलकम एवरीबॉडी टुडे। हमारे साथ अभी अनिल जी भी हैं, आशा जी भी हैं, हेलो एंड नमस्कार, रमा जी भी हैं, कमलेश जी भी, रमा जी गुड मॉर्निंग, and there's somebody welcome Bruce. He's thank you so much for joining us. So we were just remembering a little bit today's death anniversary. I'm not sure if it's exact date or not, but it's around this time that Lata ji passed away last year, and we just, you know, we're giving a little you can say remembrance, or we're just talking about her. So I said, you know, Nupur, you're such a, not only you're a good chef, but you're also a fantastic singer. I try. I try. So, I was requesting कि थोड़ी सी लाइनें I will sing a song. हालांकि शायद मेरी जिंदगी की ये बहुत बड़ी आयरनी है कि लता मंगेशकर की गाने मुझे पसंद तो बहुत है, लेकिन क्योंकि मेरी आवाज की रेंज वहां तक नहीं पहुंचती, I always have to either transpose the songs or then skip them all together. लेकिन फिर भी ये गाना मुझे बहुत पसंद है, तो मैं आपके लिए जरूर गाऊंगी। रहे ना रहे हम महका करें, बनके कली बनके सबा बारे वफा में, रहे ना रहे हम। तो वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन आई एम श्योर कि वो कहीं कली बनकर सबकी जिंदगी को महका रही है। ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है जिस पे उन्होंने गाना ना गाया हो। तो जिंदगी में जब आपको इंस्पिरेशन की खास जरूरत हो, आई एम श्योर एक बॉलीवुड का गाना उसके लिए जरूर बना हुआ है, राइट? ये मेरा लास्ट ऐड है पीछे, बट देखो ना, आई थिंक उसने सारी एक्ट्रेसेस के बैकग्राउंड गाने गाए हुए हैं। Didn't she sing all? Pretty much everybody उस वक्त की जो भी थी, even the younger ones. Yes. Preeti Zinta also she sang, and Veer Zara mein she sang quite a few songs. Oh yes. That was, I think that was around the last time that she sang. तेरे लिए हम हैं जिए हर आंसू पे. So उसके बाद में थोड़ा she tapered off. But देखो ना, मैं अभी my dear friend had very lovingly invited me yesterday and Rama ji को अपने घर में, तो उन्होंने डिजर्ट बनाया, क्या क्या नहीं बनाया हमारे लिए। तो मैं कहा ये डिजर्ट तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, तो मैं कहा आप you have to come tomorrow to my program, you're coming anyway, so how about sharing this recipe? Yes, and with definitely. Definitely. मैं कहा it's not that, yeah, it is very interesting and very nice, and I think
not that difficult to make. So far, I'm thinking, because I was. It's very simple. I was on the And other this side is eating. perfect for people. ये जो dessert हम बना रहे हैं, इसका नाम है रसमलाई कुल्फी फ्रूट कॉकटेल. तो ये उन लोगों के लिए बिल्कुल सही है जिनके पास बेकिंग स्किल्स नहीं है मेरी तरह. अवन है, सब कुछ है, लेकिन बेकिंग से डरते हैं. बाजार जाकर 10,000 चीजें खरीदने का ना वक्त है ना इंटेंशन है, लेकिन फिर भी कुछ मीठा खाना चाहते हैं और कुछ हटके खाना चाहते हैं. वही हलवा और सेवियां खा खा के बोर हो चुके हैं. ये रेसिपी उन लोगों के लिए है. थोड़ी सी हटके है, आपको अबाउट 10-15 मिनट्स का वक्त देना पड़ेगा. एंड आफ्टर दैट इट्स रियली एवरीथिंग हैपेंस ऑन इट्स ओन. इसका एक नो कुक वर्जन भी है जो इंस्टेंट पुडिंग से बनता है. किसी दिन अगर अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह वो भी दिखाऊंगी आपको. फिलहाल हम गैस पर 2 कप दूध हम बॉईल कर रहे हैं. ठीक है. सो द पॉइंट इज हम एक कस्टर्ड बनाएंगे जिसमें हम रसमलाई का फ्लेवर देंगे और उसमें टेक्सचर देने के लिए हम फ्रूट कॉकटेल डालेंगे. फिर हम इसको असेंबल करेंगे एंड वी विल असेंबल इट इनटू these ramekins, क्योंकि कल मैंने ऐसे ही सर्व किया था और वीना जी को एग्जैक्टली वही चाहिए था. इसके मैं 2 वर्जन्स बनाऊंगी. एक ब्लैक फॉरेस्ट केक की तरह, यू नो, विद केक एंड रसमलाई फ्लेवर कस्टर्ड, और एक मैं बनाऊंगी जस्ट एज इट इज जैसे मैंने कल सर्व किया था. सो दिस इज द, ये फिर भी काफी बड़ा पोर्शन है. इससे छोटे भी शॉर्ट ग्लासेस मिलते हैं, आप उनको भी यूज कर सकते हैं. It makes it very easy to do the portion control when it comes to dessert, especially if you're trying to watch your calories. Okay? So this is 2 cups of whole milk. You can use any milk of your choice, but whole milk gives you best results. Also, if you want a richer dessert, जो आपको थोड़ा creamy लगे और ज़्यादा rich लगे, तो उसके लिए आप इसमें डालेंगे 1 टीस्पून बटर. अगर अनसॉल्टेड हो तो बहुत बेहतर है, और अगर नहीं है तो थोड़ा सा सॉल्टेड डाल भी देंगे तो कोई मसला नहीं है. इसको हम जेंटली स्टर करेंगे. साथ ही में जाएगा थोड़ा सा इलायची पाउडर. कोई भी एसेंस जो है आपको तब नहीं डालना है जब ये लिक्विड गर्म है, आपको तब डालना है जब वो गैस से उतारा जा चुका है. ठीक है. तो ये डाल लिया आपने. अब अगर आपके पास रसमलाई एसेंस नहीं है, जो कि मेरे पास है, इसको कहते हैं कुल्फी एसेंस या रसमलाई एसेंस. द ब्रांड इज OSSO. इफ यू डोंट हैव दिस, बेसिकली यू हैव टू रिमेंबर दैट रसमलाई इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सैफरॉन, कार्डमम एंड रोज. अगर आपके पास कुछ जाफरान के कतरे हैं, आप वो डालिए. आप उसके साथ इलायची का पाउडर डालिए और ठंडा होने पर रोज वाटर डालिए, तो आपको वो कुल्फी वाला सारा फ्लेवर मिल जाएगा. ठीक है. आइसक्रीम बनाइए या कुछ भी करिए कुल्फी फ्लेवर को डुप्लीकेट करने के लिए विदाउट यूजिंग एन आर्टिफिशियल एसेंस. आप इस तरह कर सकते हैं. आई पुट अ लिटिल बिट ऑफ सैफरॉन ताकि इसमें हल्का सा कलर आए. अगर आपके पास सैफरॉन नहीं है तो आप एक छोटा सा पिंच टूथपिक के एज से 1 पिंच फूड कलरिंग येलो कलर का डाल सकते हैं. ठीक. ये हो गया. अब इस कटोरी में है हमारे पास ठंडा दूध. मेक श्योर इट्स कोल्ड मिल्क. वी आर गोइंग टू टेक vanilla custard. This is the flavor that I have. National का है. आप brown and Polson, whichever one you want, you can use. I use this, and I'm going to reduce the flame, and I'm going to go in here and add the milk, the custard powder to this. Just 1 to 2 teaspoons, and then we'll add it gradually to thicken it. If you're going to make a molded dessert, so this is just a standard recipe. अगर आप molded कोई dessert बना रहे हैं, जैसे upside down वाला कोई आप pudding बना रहे हैं, उसको सर्व करना चाहते हैं, तो put more of the custard powder. और भी इसको rich करना चाहते हैं तो फिर eggs डालने पड़ेंगे आप. लेकिन अगर आप eggless बनाना चाहते हैं तो सिर्फ custard powder से भी हो जाएगा. So this is all good for vegetarians, right? There's no this is vegetarian. There is no egg in this. Right. Okay, so you need to have cold milk in order to dissolve the custard powder. ये दूध अपने आप में उबल ही रहा है. आप देख सकते हैं saffron की वजह से थोड़ा सा इसका कलर चेंज हो गया. I like to make it in a कढ़ाई because इससे क्या होता है, साइड में जो ये मलाई जमती है इसको आप स्क्रैप करके वापस डाल सकते हैं. तो अगर आप आइसक्रीम भी बना रहे हैं या कुल्फी भी बना रहे हैं तो ये मलाई जो है ना, ये बहुत काम आती है, स्पेशली इफ यू आर डूइंग लाइक रबड़ी और समथिंग लाइक दैट. जब आप कढ़ाई में दूध उबालते हैं तो इसकी जो साइड्स हैं, इस कुरचल को आप वापस डाल दें. ओके. अब हम इस कस्टर्ड पाउडर को ऐड करेंगे. पहले इसको अच्छे से उबलने देंगे. राइट. एंड वेरेवर इट्स बॉइलिंग यू आर गोइंग टू ड्रॉप दिस कस्टर्ड पाउडर का जो मिक्स हमने बनाया है. प्लस यू हैव टू कॉन्स्टेंटली स्टर इट ताकि इसमें लम्प्स नहीं पड़े. ये जैसे बॉयल होना शुरू हुआ,
आपने इसमें धीरे धीरे इसको ड्रॉप करना है। फ्लेम इज ऑन हाई, तो ग्रेजुअली जैसे ये कुक होता रहेगा ये थिकन होता रहेगा। अगर आप मोल्डेड डिजर्ट्स बना रहे हैं तो इसको काफी थिक करिएगा ताकि वो मोल्ड को अच्छे से पकड़े और सेट हो जाए और फैले ना जब आप उसको फ्लिप करें अपसाइड डाउन। Okay, so you're just going to give it a good whisk so that there are no lumps. This away. This is on high, so you really have to cook out the custard powder and also thicken your liquid at the same time. तो दोनों चीजें साथ के साथ होंगी। And you're going to turn off the stove. That's it. और कुछ नहीं करना है आपको। This is like the simplest thing for you. Veena ji, I hope you're moderating the comments. If anybody has any comments, Wait, let me see. They are watching. I think everybody's busy watching. Busy watching. Okay, fabulous. Busy watching, yeah. वो तो that's a good problem to have. जी लिख रहे थे पहले कि you're so talented and well-rounder. Thank you, thank you. And you're also greatest chef. So people are watching and I think they're all watching. I try. Yeah. So the way to test is कि आपका custard तैयार है कि नहीं। आप एक स्पून लीजिए और उसके पीछे से उसको कोट कीजिए। Be careful, it's going to be very hot, and run your finger through. Oh. अगर ये ऐसे इकट्ठा नहीं होता, that means it's good. इसकी thickness सही है। Okay, that's good. This is for people that don't eat sugar. अगर आप चीनी खाते हैं तो जब आप दूध बॉईल करते हैं तभी आप चीनी डाल सकते हैं, ठीक है। अगर आप चीनी नहीं खाते तो स्टीविया या हनी या जो भी आप डालना चाहते हैं, you can put that. Now don't make this overly sweet, especially अगर आप layered dessert बना रहे हैं तो उसको बहुत ज्यादा मीठा मत कीजिए, क्योंकि depending on what other elements are going to go, you might be adding chocolate, you might be adding berries. उन चीजों की अपनी मिठास होती है, तो बहुत ज्यादा इसको मीठा नहीं करेंगे। मैंने 3 से 4 छोटे चम्मच इसमें डाल दिए। But कोई let's say a group of people coming, उनमें से एक दो चीनी खाते हैं, एक दो नहीं, मतलब let's say half eats the sugar, half without the sugar, then what you do? वीना जी, अगर कोई बिल्कुल ही चीनी नहीं खाता तो पहली बात तो उसको डिजर्ट बार से दूर ही रहना चाहिए, ठीक है। अगर एज अ केटरर अगर मैं कोई पार्टी केटर कर रही हूँ तो और उसमें 2-3 डिजर्ट्स है तो मैं कोशिश करूंगी कि एक जो है कम से कम शुगर फ्री हो, जिसमें शुगर सब्स्टिट्यूट यूज किया हुआ, ताकि जो नॉन शुगर ईटिंग पीपल हैं उनके लिए भी कोई ऑप्शन बचे। या फिर फ्रेश फ्रूट्स का प्लेटर रख सकते हैं, और अगर वो मीठा नहीं खाते तो भी मॉडरेशन में खा सकते हैं। जब आप उनके लिए असेंबल करेंगे डिजर्ट, सो पुट मोर ऑफ द फ्रूट्स एंड पुट लेस ऑफ दिस, सो दैट्स अनदर वे टू डू इट। There must be some way. उसमें नट्स आप ज्यादा डाल दीजिए, उसमें फ्रूट कॉकटेल के फ्रूट्स आप ज्यादा डाल दीजिए। देयर आर वेज टू डू इट। Okay, good. अच्छा, अब हम इस कस्टर्ड को पूरी तरह ठंडा करेंगे। गर्म कस्टर्ड में कभी भी कोई फ्रूट्स या कुछ नहीं डलते, ठीक है। नॉट इवन किशमिश। कई लोग आपको बोलेंगे किशमिश डाल दो, फूल जाए। किशमिश विशमिश कुछ, अगर आप कोई भी मिल्क बेस्ड डिजर्ट बना रहे हैं जिसको आपको अगले दिन सर्व करना है या फ्रिज में रखना है, उसमें कभी भी किशमिश नहीं डालना, बिकॉज किशमिश इज गोइंग टू स्पॉइल योर डिजर्ट, मिल्क बेस्ड डिजर्ट वेरी क्विकली। तो अगर आप खीर भी बना रहे हैं उसमें किशमिश नहीं डालना, वो सर्विंग के टाइम डालना है, आपको पहले से नहीं डाल के रखना, ठीक है। हाँ, तो अनदर टिप इज, अभी मैं जो बनाऊंगी आई एम गोना पुट इट इनटू दीस ramekin's, राइट, फॉर सर्विंग, राइट। लेकिन लेट्स से यू आर गोइंग टू अ पॉटलक, कोई आपकी कोई कपल किटी है जिसमें आप वैलेंटाइंस डे मना रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, राइट, तो उसके लिए देन यू कैन टेक अ लेयर्ड बोल एंड यू कैन लेयर इट लाइक अ ट्राइफल। तो आप एक लेयर इसका लगाएंगे, फिर एक लेयर बेरीज का लगाएंगे, फिर क्रीम डालेंगे, तो वो साइड से भी खूबसूरत दिखेगा और ऊपर भी आप उसको अच्छे से डेकोरेट कर सकते हैं। एंड पीपल कैन जस्ट टेक व्हाटएवर पोर्शंस दे वांट। अ ग्लास डिश इज आइडियल क्योंकि उसमें फिर आपको सारी लेयर्स दिखाएंगे। सो दैट्स अनदर थिंग। ओके, अब हम इसको ट्रांसफर करेंगे। आई एम जस्ट गोइंग टू फ्लिप द कैमरा सो एवरीबॉडी कैन सी व्हाट्स गोइंग ऑन। That looks really delicious. And if you feel like there are lumps, तो आप इसको स्ट्रेन कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मेरा एक नॉन स्टिक पॉट है, उसको देखने से तो लगता है नॉन स्टिक है, लेकिन फिर भी उसके नीचे दूध चिपक सा जाता है और जल जाता है, तो इसलिए मैं हमेशा उसमें जब बनाती हूँ तो स्ट्रेन करती हूँ। थैंकफुली दिस कढ़ाई इज प्रीटी न्यू, तो मुझे वो करने की जरूरत नहीं पड़ती, बट टू बी ऑन द सेफ साइड इफ यू वांट यू कैन। और क्योंकि इसमें हमने मलाई वापस डाली है, आई डोंट वांट टू स्ट्रेन इट, क्योंकि फिर वो मलाई सारी वेस्ट हो जाएगी। अच्छा, yes, I'm going to make a very अच्छा, अगर आपको वो मलाई यूज भी करनी है और स्मूथ भी चाहिए, तो वो मलाई इसमें ऐड करने के बाद जब ये ठंडा हो जाएगा तो आप इसको एक बार मिक्सी में ब्लेंड कर सकते हैं। अच्छा, तो सारे मैंने आपको जुगाड़ बता दिए, डिपेंडिंग ऑन व्हाटएवर टेक्सचर यू लाइक। सम पीपल डोंट लाइक द टेक्सचर ऑफ मलाई, सम पीपल लव द टेक्सचर ऑफ मलाई, सबके अपने अपने
व्यूज होते हैं। मैंने वनीला फ्लेवर का कस्टर्ड यूज किया है, अगर आपको कोई और फ्लेवर पसंद है तो आप कोई और भी बना सकते हैं। मैंगो हो गया, स्ट्रॉबेरी हो गया, वैलेंटाइंस डे तो आप स्ट्रॉबेरी कस्टर्ड भी डाल सकते हैं। इट्स गोइंग टू बी it's going to make a very good dessert. No, that's true. That's looks very, I mean, I think everybody likes this kind of things. So, it's I like vanilla because it's a very good blank canvas to do whatever the hell you want. और vanilla में आप ये Indian flavors बड़े आराम से infuse कर सकते हैं, ठीक है? Whereas if you are doing a strawberry custard or something, then it becomes quite complicated to make it into an Indianized version. At the most आप क्या कर लोगे, ऊपर रूअफ़ज़ा छिड़क लोगे, you know? But अगर आप mango या vanilla use करते हैं, so it gives you a very good canvas. Right. To do whatever you want. So if you want to do like chocolate cups, if you want to do peanut butter and chocolate cups, if you want to do strawberry shortcake cups, Nutella cups, just fruit and vanilla, तो आप हर वो चीजें कर सकते हैं। आप pistachio करना चाहते हैं, कुल्फी flavor करना चाहते हैं, vanilla gives you a really, really good blank canvas to do that. Yeah, that's true. Okay. Now I'm going to address one problem that a lot of people have with custards. सबसे ज्यादा शिकायत ये रहती है कि जब हम कस्टर्ड को फ्रिज में रखते हैं, lump हो जाते हैं, they have little lumps in it sometimes, do they? If it has lumps, then you can either churn it in the blender or use your hand blender, जो stick blender होता है, उससे आप उसको churn कर सकते हैं, and then you can put it wherever you're trying to save it. ठीक है। दूसरी बात ये है कि बहुत लोगों को ये शिकायत रहती है कि जब हम कस्टर्ड को फ्रिज में रखते हैं तो इसके ऊपर मलाई आ जाती है। Okay, so I'm going to teach you the trick to how to get rid of that as well. एक second, let me just adjust the camera ताकि आपको आराम से दिखाई दे। उसके लिए सबसे बेस्ट फ्रेंड है आपका क्लिंग फिल्म यानी कि saran wrap. And I'm going to teach you what is the technique to put the saran wrap so that you won't have the malai on top. तो समझ लीजिए ये आपका बर्तन है जिसमें आपने इसको ठंडा करने रखा है। You have to take the cling film and put it on the surface of the custard. तो make sure करिए कि ये जो film है ये इसके surface को touch कर रही है like this. So just very gently put it on the surface so that none of the surface is exposed to the air. Okay. So once you do that, आपके custard के ऊपर वो जो मलाई जम जाती है जो कि बहुत irritating लगती है और बच्चे तो खासकर बड़ी शक्लें बनाते हैं, they don't want to eat it. You just do that. तो इससे क्या हुआ कि वो जो हवा उस कस्टर्ड के सरफेस को टच करके मलाई क्रिएट करती है वो हवा अंदर नहीं जा सकती, राइट? एंड देन इसके ऊपर अगर आप चाहें तो कवर लगा लें, चाहें तो आप इसके ऊपर एक ढक्कन लगा लें, नहीं तो फिर एक और लेयर आप क्लिंग फिल्म का लगा लें। दैट्स इट। इसीलिए जब इसको आप ठंडा करने रखें इसके ऊपर कोई टॉपिंग्स ना डालें बिकॉज वी वांट the cling film to touch the surface. So if you have topping, it's going to stick to the cling film, and that's not the idea over here. So you can make this how long before? Like you have to make it at least 4 to 6 hours before because isko refrigeration की ज़रूरत पड़ती है before you can actually assemble your custard and set the dessert. इसको कम से कम 4 से 6 घंटे अगर आप फ्रिज में रख दे तो बहुत बढ़िया, ओवरनाइट रख दे तो और भी बढ़िया है। अच्छा, you can do that. Okay, good. So sometimes हाँ, अब जब ये ठंडा होगा तो इसमें फिर हम कुछ ड्रॉप्स ये डालेंगे। ये है हमारा कुल्फी एसेंस या रसमलाई एसेंस, व्हाटएवर यू कैन फाइंड, ये आप लेके आएंगे बट ठंडा होने के बाद, उससे पहले नहीं, ठीक है? दैट्स द स्टेप। ये रहा, दिस इज द ब्रांड, इट्स कॉल्ड OSSORO, ओसोरो। Okay. This is what I use. It's called Kulfi Essence. इसमें बहुत सारे अलग-अलग essences आते हैं। कोई भी essence आप खरीदें, make sure, double, triple, quadruple sure that it should be in a dark bottle. Then only it's genuine. It should have a dark label and it should be in a dark glass bottle. Then only it's a genuine essence. Otherwise, it's fake. Where do you get that from? Indian stores or any store? I got this in India, but Amazon पे सब कुछ मिल जाता है। Oh, okay. Oh, yeah, that's good. Good. So all the professional bakers in India, they use this essence. ठीक है, just make sure कोई भी essence ले, it should be in a dark glass bottle and it should be in a dark label. Then you know it's genuine essential oil that needs to be preserved. और इसको हमेशा you have to put it in a cool place. Okay, now I'm going to take this and I'm going to stick it in the fridge for the next 4 to 6 hours. ठीक है? Okay. अब हम आ गए हैं बड़े interesting part पे, which is how to assemble this dessert. तो मैं आपको
वो दिखाने के लिए ले आती हूँ. I'm gonna do a couple of versions. सबसे पहले मैं आपको ये दिखा दूं कि what is the fruit cocktail that we are using. This is a can of fruit cocktail जो आपको बाजार में आसानी मिल जाता है. It can be any brand, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी ब्रांड ले आइए. And just drain this. Okay, so you don't want the syrup. No syrup. No, you don't want the syrup क्योंकि आप already custard में चीनी डाल चुके हैं. Yeah, right. इस सिरप को फेंकिए नहीं. अगर आप स्मूदीज बना रहे हैं या लस्सी बना रहे हैं या कुछ भी बना रहे हो, उसको आप यूज कर सकते हैं. लेमनेड में यूज कर सकते हैं, कहीं भी यूज कर सकते हैं. ओके, तो ये सारा हमने ड्रेन कर लिया. अगर फ्रेश फ्रूट्स का मौसम है तो आप स्ट्रॉबेरीज इसमें ऐड कर सकते हैं, एप्पल्स ऐड कर सकते हैं. एप्पल्स टेंड टू गेट अ लिटिल डार्क, सो आई एम पर्सनली नॉट अ फैन ऑफ इट, बट यू कैन ऐड रेड ग्रेप्स, कुछ भी ऐड कर सकते हैं. ठीक है, तो नाउ अब हम आते हैं प्लेटिंग पर. I have actually created a plate for a couple. This is what I've created. Oh my God, that's beautiful with the flowers. Right, so there are two ramekins. There is a golden heart and there's a little bit of flowers. Okay, that's so pretty. Yeah, then those two. Okay, so this is for a couple, and these golden hearts you can find in any dollar store. You can find it in Michael's. You get them in, these are called doilies. You get them in gold, you get them in white. I use them a lot in my packaging and presentations a lot. They look So very you can take a look, you can take a picture, and I've just taken a basic black tray and I've put two ramekins. So we're going to make two that are going to be identical and a third one that I'm going to show you a variation of. Okay? So this is my plating. I have matching gold spoons. You can just do it your way. I think we eat with our eyes first. Food that comes really beautifully plated, usko aapko khane ka bhi ji chahta hai. Presentation बड़ी जरूरत बहुत मायने रखती है. Yes. And sometimes when we go to restaurants, we actually go for the ambience, and the presentation of the food is a huge part of the ambience, along with, you know, the decor or aaspaas. I was very impressed in India. All the 5-star hotels. Oh yes. If you go and eat over there, the pastries and the way they present things. India is some next level. आप इंडिया में किसी भी 5-star का किसी buffet में जाइए. It's fantastic. Like they've really got it packed down. Really, they got it. Very good chefs, I have to say. तो चलिए अब हम करते हैं assembly का process. हम शुरू करेंगे. Let me just flip the camera so you can see. Veena ji, just tell me if the camera angle is okay. Yeah, I can see you. I can see you doing this. Okay, perfect. So this is the custard जो मैंने already पहले से ठंडा करके रखा हुआ है. This is what I have. जब आप भी उसको ठंडा कर लेंगे तो वो भी कुछ इस तरह दिखेगा. इसमें मैंने बटर नहीं डाला था तो ये फिर भी थोड़ा सा रनी है. जो अब हमने डाला है वो थोड़ा सा और भी थिक होगा क्योंकि उसमें ऑलरेडी बटर था. ठीक है, so I'm just gonna grab a couple of spoons to assemble this thing. सबसे पहले नीचे हम डालेंगे थोड़े से fruits. Also gonna use a little. कोई भी आपके घर में जैम या जेली हो, especially strawberry jam, strawberry jelly, कुछ भी डालिए. Yeah. And I'm gonna tell you the trick to this. ये भी मैं आपको बताती हूँ. No secrets are held back. सब कुछ बताऊंगी आपको. उसके बाद हम ये everything is store bought. अगर आप ये देखें, these are all very easily available in the stores. अगर आपके पास ये नहीं, आप heavy whipping cream डाल दें. अगर आप cream नहीं खाना चाहते, थोड़ा सा Greek yogurt डाल दें. हर काम को करने के तरीके बहुत होते हैं, बस हमें ढूंढने पड़ते हैं. Right, Nupur? This is whipped cream है ना ये? This is whipped cream in a can, वीना जी. Yeah. इसको मैं flatten कर रही हूँ. ठीक है. उसके बाद we will go in with the custard. और जितनी खूबसूरती से आप उसको लेयर करेंगे उतना वो उसका इफेक्ट अच्छा आएगा, देखने में उतना ही हसीन लगेगा. So it's really up to you कि आप उसको presentation जो है ना बहुत जरूरी है. I mean, like I said. अब इसमें फिर से थोड़े से fruits जाएंगे. People eat with their eyes. That's बेशक बेशक. And you don't even have to fill them all the way. आप इसको इतना ही भर के छोड़ दे तभी भी वो अच्छा लगता है. You know? Then you can go back. अगर आपको थोड़ा और custard डालना है, थोड़ा और डालिए. ठीक है. इसके बाद अगर आप थोड़ा सा और इसमें थोड़ा कलर देना चाहते हैं, you can use cherry pie filling, you can use fresh strawberry syrup. ऐसा कोई जैम यूज कर सकते हैं जो आपके पास ऑलरेडी पड़ा हुआ हो. उसको मैंने थोड़ा सा पतला कर लिया हुआ है. There's no rocket science. मतलब ये बच्चे भी बना सकते हैं. That is true. बिल्कुल ठीक बोला आपने. ठीक, ये हो गया आपका. और इसके बाद इसके ऊपर जाएगा just a couple of strands of saffron.
और एक बहुत ही हल्का सा पिंच जाएगा कार्डमम का। अच्छा। इसके अंदर मैंने रसमलाई एसेंस ऑलरेडी डाला हुआ है कस्टर्ड में, तो मुझे ऊपर से कोई रोज वाटर वगैरह डालने की जरूरत नहीं है। अगर आपने रसमलाई एसेंस नहीं डाला कस्टर्ड के अंदर तो फिर आपको इसके अंदर थोड़ा सा रोज वाटर डालना पड़ेगा। I'm just gonna go ahead and clean the edge of this glass ताकि ये बिल्कुल साफ लगे। अगर आप नट्स डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं। कल मैंने थोड़े से नट्स डाले थे और मूंगफली की चिक्की की क्रिस्प की टॉपिंग डाली थी, तो उससे क्या होता है एक टेक्सचरल variation आ जाता है। So when you eat it, you get all the different kinds of textures that are exploding in your mouth. This is what it's going to look like. Beautiful. And you already know what it tastes like, right, Veena ji? वो तो मैंने कहा नुपुर अभी आ रही है वैलेंटाइन, तुमने you are supposed to come today and जी how about making the same dessert that you made for us? बेशक बेशक, we liked it so much, so I'm sure everybody will love it. I'm going to just repeat the process. I'm going to do it all over again. Okay, this is first you put the fruit there, but you थोड़ा सा उसको हाइट देने के लिए आप थोड़ा सा फ्रूट डालेंगे, नहीं तो फिर वो बहुत ज्यादा क्रीमी हो जाता है। Put the fruit and some put the fruit, put a little bit of the syrup. उसके बाद you will go in with the custard. और जितना छोटा और फोकस चम्मच होगा उतना ज्यादा आपका ये सही जगह बैठेगा। कुछ लोग क्या करते हैं पूरे कस्टर्ड में पूरा फ्रूट मिला देते हैं और फिर उसके बाद सामने रख देते हैं टेबल पर। इट्स अ वेरी रस्टिक वे ऑफ डूइंग इट। मतलब हाँ इट वर्क्स, स्टिल टेस्ट गुड क्योंकि आपके एलिमेंट्स तो सारे वही हैं। बट यही होता है कि जरा सी उसमें अगर आप थॉटफुलनेस डालें तो खाने वाले को भी लगता है कि भाई अगले ने कुछ तो सोचा था हमारे सामने ये फेंकते वक्त ना। अभी तो डॉग फूड में भी इतनी वैरायटी आ गई थी, ये तो हम तो फिर इंसान I know there's so much variety, that's true. Even dogs have like gourmet dishes and this and that, right? तो हम क्यों पीछे रह जाएं? A little bit of the jam. Yeah. और इतना छोटा वो सरफेस एरिया होता है कि आपको जो भी कलाकारी करनी है उसी में करनी है। I mean for such a container कितनी चीजें आगे आ भी गई हैं इसके अंदर। Lot of things are there. हाँ काफी कुछ। आजकल हर जगह डिजर्ट्स ऐसे ही सर्व किए जाते हैं वीना जी। वो बड़े बड़े डिजर्ट प्लेटर्स वगैरह का जो ट्रेंड है वो खत्म हो चुका है। Think that you're right. Because everybody is trying to watch their calories and they say it should be decadent and it should be worth their while. So less is more. If you use quality ingredients, a little bit of a dessert goes a long way. अगर आप सस्ता सा कोई cheap dessert बनाएंगे तो फिर आपको काफी सारा बनाना पड़ेगा क्योंकि वो थोड़ा सा खा के किसी को तो this is also very, I think more like like everybody gets their portion. You don't have to dig into the. It's very elegant. It's very elevated. Yeah, and you don't have to take a big plate and put it in there, and then everybody's taking the, big spoons and अपना आप ले रहे हैं, making a big mess. Making a big mess. So this is more elegant. Because you're right. Okay, so this is your plated dessert. Oh, wow. If you want to take a screenshot, you can. I am going to take it. मैंने पहले भी लिया था, but I'm going to take this one. लीजिए. Yeah, आपके साथ. अब तो ये खाने के लिए फराना पड़ेगा. आइए आइए, दरवाजा हमेशा खुला है आपके लिए. You know it. अब तो घर भी देख लिया आपने, अब क्या मतलब? Okay, so this is our plated dessert for 2. And you can just make it ahead of time. खाली whipped cream की topping आप अगर अगले दिन लगाएं just before serving तो भी बहुत बढ़िया रहेगा. Now I'm going to show you one variation that I do with cake, and it's a very good way of using leftover cake bits. या फिर अगर आपने केक को किसी शेप में काटा और आपके पास leftover cake है या odd bits का केक है, उसकी मैं आपको एक variation दिखाती हूँ. If you especially for हाँ जी pound cake हो सकता है, जैसे pound cake बच गया. Yes, any kind of cake. बताती हूँ आपको, पूरा मैं करके दिखाती हूँ. स्पेशली अगर आपको ब्लैक फॉरेस्ट केक बहुत ज्यादा पसंद है तो आप ये करेंगे. एंड थैंक मी लेटर. जब आप बनाइएगा तो वाकई आप मुझे याद करिएगा. तो मेरे पास है ये चाय केक. ठीक है, कल मैंने ये चाय केक बनाया था विद वॉलनट्स एंड cashews. You packed some for me. I ate it last night. Delicious. अच्छा था. चलिए, I'm glad you liked it. ठीक है, तो जब हमने पैन को फ्लिप किया तो उसके नीचे से ये निकला और ये लोफ था. ठीक है, तो दिस आई नो आई कैन यूज. लेकिन जब इस तरह की चीजें आपके पास बचती हैं या एक ऐसा एंड पीस बचता है जिसको आपको समझ नहीं आ रहा क्या करें, तो अब हम इसको यूज करते हुए एक इसी डिजर्ट का वेरिएशन बनाएंगे.
And you can do this with chocolate cake, you can do this with plain cake. अगर आपको black forest पसंद है तो definitely इसको try कीजिएगा. For that, what I'm going to do is I'll teach you this hack also. अब मैंने क्या किया? I took a ready-made jar of grape preserves. I don't have strawberry jam in my house. I don't use jam. I only use fruit preserves. So this is grape, as you can see, right? And you can see the color is a little dark. Let me pick it up in a black spoon and show you. ये देख रहे हैं आप कितना dark color है. So it's called a grape preserve. It's a grape preserve. आप कोई भी strawberry jam, Smucker's का fruit preserve कुछ भी ले सकते हैं. अगर Valentine's के लिए कर रहे हैं, Black Forest को mimic कर रहे हैं, so use a strawberry flavor. ठीक है? Right. So this was grape. Obviously, it's not going to be a bright color, and I want to give a little brightness. So what I did was I took it and I took it, made a puree out of it. इसी को मैंने पूरे jar को मैंने इसमें उल्टा दिया क्योंकि ये grapes whole है, right? So I wanted a little bit of a jammy consistency. तो इसलिए मैंने उसको stick blender से blend किया है. I have not added any water, and then I've added red gel food coloring which has no flavor. Okay. So it immediately changes the color of this thing. अब मैं आपको इसका color दिखाती हूँ. So just compare the color, right? So this is the color of the original grape preserve. Achha. After adding the food coloring, this is the color of the grape preserve. अभी भी मुझे लगता है कि एक shade और bright हो सकता था. ठीक है, लेकिन मैं बहुत कम coloring use करती हूँ तो इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा नहीं use किया. So let's go with how to make this into a cake, black forest kind of a thing. So आप इसके crumbles डालेंगे नीचे. Instead of putting the fruit, you're going to put the cake crumbles at the bottom. और जो भी आपका custard है वो सारा इसके अंदर soak हो जाएगा. Yeah, that's what I was going to say. It's going to be a very, very good mouth feel. That's going to be very delicious. Yeah. Right? So you're going to put in the jam. Then you're going to put in a little bit of the fruit cocktail का वो जो syrup था ना, वो थोड़ा सा जाएगा इसके अंदर. Then you're going to go ahead and add your custard. The custard remains the same. आपने कुछ करना नहीं है. बस ये है कि जब अगर आपने black forest वाले cups बनाने तो आपको रसमलाई का flavor नहीं डालना है. Just go with vanilla. That's all. So you're not going to make it a rasmalai. Not in black. The cake. Not for the cake. It's just going to be vanilla. Vanilla. ठीक है, ये आ गया. इसके बाद जाएगा एक thick layer of the cream, because black forest is really essentially just the cream and right. ये बीच में जाएगा. उसके बाद फिर जाएगा थोड़ा सा केक. So basically the same steps almost. Same steps. आप layering कर रहे हैं so that जब वो spoon नीचे जाएगा तो हर bite में आपको पूरा flavor का explosion मिलेगा. But this is going to be more jammy because black forest. And then you're going to also put shaved chocolate, which I don't have right now. But you're going to use shaved chocolate. When you put shaved chocolate, then it's going to absolutely give you that flavor of, you know, those expensive black forest desserts जो हम $6 के खरीदते हैं और खाते हैं, right? Yeah. You're going to do this. Now you go and buy one of this from the stores. They're like $10. Yeah, each one is $6, $10, minimum $6. But they have them all ready, and then you just pick it up and eat it. People eat it, you know, on the go. They pick it up, and they go home, and they pick it out. And they use a lot of stabilizers in the cream so that it's going to look pretty. You don't need to use all those chemicals. आपको जरूरत नहीं, आप अपने हिसाब से बनाइए. And you can put a little shaved chocolate if you have. I probably have some cocoa powder. I'm going to put that. Okay. So friends, everybody's, as everybody knows, Valentine's next week. तो आपको पहले रेसिपी बता दी है, आप पहले थोड़ा प्रैक्टिस कर सकते हो. जब टाइम आएगा इसको बनाइए और हमें भी टैग कीजिएगा ताकि हमें भी पता चले कि जो रेसिपीज हम आपको देते हैं आप उसे बनाते हैं, आप उसे पसंद करते हैं, right? So this is going to be your black forest dessert. ये केक के साथ है. You can make it with this. अगर आपको कॉफी dessert चाहिए तो उस केक को कॉफी में डिप करके फिर उसके साथ लेयरिंग कीजिए with coffee cream or whatever. इतने हजारों variations है. Whatever flavor profile you like, you can make it. You can do a citrus kind of a ramekin with vanilla and orange to do like a creamsicle version. You can do a peach cobbler version. You can do a
brown sugar, apple, cinnamon version. There are so many things you can do. Just learn how to make the basic custard with vanilla, and then you can infuse any flavors that you want. Okay. So these are our 3 desserts that we make today. I am going to have to refrigerate them very, very quickly so that they don't get spoiled. But that's it. If anybody has any questions. Let me show that picture again. I'm going to take a picture of that one. Yes, sure. I'll bring the other tray also. Yeah. Also, this is the tray with the 2. Yeah, that one I took already. The other one, abhi jo banaya na? Ah, sure. Black forest wala. Yes. That one. Just instead of the whipped cream on the cake, can we use Greek yogurt? Yes, you can. You can use Greek yogurt. You can use heavy cream. You can use any kind of milky cream. अगर आप कुछ भी इसमें से नहीं खाते तो आप कोकोनट मिल्क को भी whip करके उसकी भी cream बना सकते हैं. Okay, this is good. This is the plain one, the black forest one. Yeah. Yeah, very pretty, very nice. I love all. See, I always buy this when I go out with the Greek yogurt. I like the Greek yogurt. That you can make your own parfait. Yeah. Like you can do a fruit and yogurt parfait. Yeah. You know. Yeah. Exactly. So chaliye, that was that for today. If anybody has any questions, I'm happy to take questions. Some comments so tempting. Nupur so delicious, beautifully presented. Mouth watering with I could come on over and get some. Me too. I'm the whole time we're doing that, my mouth was watering. And Ushaji Kari, I missed your cooking yesterday. And kesar and pista Ramaji bhi keh rahi hain, wo bhi dal sakte hain. Kesar and pista, can we put that in? Yes, you can put. अगर आप कुल्फी फ्लेवर का बना रहे हैं तो आप केसर डालिए, पिस्ते डालिए, काजू डालिए, बादाम डालिए, जो मर्जी डाल सकते हैं. जो भी कुल्फी में रिवायती चीजें पड़ती हैं आप वो सब डाल सकते हैं. Yeah, उसमें लिखा है presentation is very important. That's very important. You can do it. Whatever flavor profile works for you and your family, you can work with that. आपको ये नहीं सोचना है कि अच्छा रेसिपी में ये लिखा है तो मुझे ऐसे ही बनाना है. Use your creativity and use the flavors that. If you want to do like a pineapple one, or you want to do a tropical fruit one, or you want to do a pina colada one, you can do it. आप उसमें coconut डालिए, pineapple का वो डालिए crushed और बनाइए. मैंगो डाल सकते हैं. मैंगो डाल सकते हैं सीजन में, स्ट्रॉबेरीज डाल सकते हैं, पीनिया कोलाडा वाला बना सकते हैं, ब्लूबेरी का बना सकते हैं. There's really no end to it. And you know, for inspiration, you can actually look at menus of smoothie bars. तो स्मूदी स्टोर्स होते हैं ना, उसमें बहुत अच्छे अच्छे मेन्यूज होते हैं. वहां से आपको फ्लेवर कॉम्बिनेशंस के बहुत अच्छे आइडियाज मिलेंगे. You know, ये चीज ऐसे चल सकती है, ये चीज ऐसे कंबाइन हो सकती है. So always inspiration तो आप कहीं से भी ले सकते हैं, right? लिखा गार्निशिंग. आप केवड़ा बादाम पिस्ता का बना सकते हैं, आप इलायची ज़ाफ़रान का बना सकते हैं, सिर्फ रोज वाटर का बना सकते हैं, रोज पेटल्स डालकर. So much that you can do. अगर आप वनीला पे टिके रहे तो you can literally play with so many other infusions और सब कुछ स्टोर बॉट हो सकता है. You don't have to. You can even make a गुलाब जामुन version. जैसे आप रेडीमेड गुलाब जामुन ले, उसको आपने हाफ में काटा और अपना वनीला कस्टर्ड में आपने थोड़ा सा गुलाब जामुन एसेंस डाल दिया या रोज वाटर डाल दिया, तो भी you can do the layers. And people make cheesecake like that too. Like they blend it with cream cheese and yogurt and then they refrigerate it. और बीच में गुलाब जामुन रखा होता है, ऊपर उसमें पिस्ते डले होते हैं. So you can do a rasmalai version, you can do गुलाब जामुन version, जो हमारे रिवायती जो Indian desserts हैं. गाजर का हलवा version बना सकते हैं आप. So there's a lot of versions. But when you do the catering, most of the people ask you for the desserts also, like this type of a dessert. Okay, it depends. If they are bringing their own desserts, then they say नहीं हमें सिर्फ खाना चाहिए, आप सिर्फ खाना देना, dessert हमारे पास है. If they want the full package, then they say no, we want appetizer, food and dessert. If they don't want appetizer, they'll say नहीं हमें appetizer नहीं चाहिए, आप हमें 2 desserts दे देना. So everybody is different. Every season is different. You know, depending on the season, कोई बोलता है cold dessert चाहिए, hot dessert चाहिए, कोई बोलता है दोनों cold चाहिए. So it really depends, you know. So I try to, अगर वो simple से simple भी dessert होती है, so I try to plate it really nicely ताकि वो इनवाइटिंग लगे और अच्छा लगे खाने में. बट ऐसा नहीं है कि प्लेटिंग करने के चक्कर में खाने का टेस्ट कॉम्प्रोमाइज होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए. अगर आपका खाना दिखता खूबसूरत है तो थोड़ा सा एफर्ट लगाइए कि उसका टेस्ट भी फिर बेहतरीन हो. यू नो, जस्ट नेल 1 or 2, 3, 4 रेसिपीज जो आपको पता है कि हमेशा अगर मुझे जल्दी में भी बनाने पड़े या बड़े ग्रुप के लिए भी बनाने पड़े तो मेरा सही बनेगा. Right. So have a couple of those kind of recipes. That's true. But आपका तो देखो ना, सुबह से you get up, you go and you make it in the morning and then you do the thing. I have to give you hats off to you. You know, you're doing so much.
Thank you. We really enjoy. हम करते हैं enjoy करते हैं आपका बहुत. Thank you. But she's Nupur is a person with a lot of, you can say, a lot of hats. I don't know. That's not the right word, but she puts a lot of different hats. She can do. When I met her, she was doing it. She was into fashion. She's still in there. She still does sometimes, I think. And now she's fully into this catering thing and making and desserts and doing all these things. कितनी creativity दिखाई अभी, which was really, I think everybody knows and see it, but when it comes to making, we really can't figure out. Making में Veena ji, I think the biggest hurdle with making something is that we don't want to go ahead and gather 50,000 ingredients. Nobody has the time for that unless that's the only thing you do. एक रोजमर्रा की जिंदगी में किसी के पास इतना वक्त नहीं होता कि वो 10,000 ingredients लेके आए और फिर बनाए. It's just too time consuming. So my point is just make it so simple, लेकिन उसको इतने अच्छी तरह आप उसको present करें, like thoughtfully करिए, simplicity से करिए, लेकिन टेस्ट पे मत कॉम्प्रोमाइज करिए. उसी चीज को बेहतरीन बनाने के लिए उसकी प्रेजेंटेशन पे काम करिए, प्लेट्स पे काम करिए, गार्निशेस पे काम करिए, बट मेन जो चीज है उसका टेस्ट कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए. बाकी प्रेजेंटेशन ऊपर नीचे टाइम के साथ यू ऑलवेज गेट बेटर. जितना आप उसको डिफरेंटली प्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे, जाहिर बात है आप बेटर हो जाएंगे. अगर आपके पास वो कुल्फी के वो कप्स हैं जो सॉर्बे कप्स होते हैं, उसमें आप उसको सर्व कर सकते हैं. यू कैन सर्व इट इन अ ट्राइफल पुडिंग वाला जो ग्लास जार होता है, उसमें सर्व कर सकते हैं. अगर आपको बाइट साइज डिजर्ट बनाने हैं, आप इन स्पून्स के अंदर स्वर्ल करके एक 1 बाइट वाले भी कर सकते हैं. सो देयर लाइक सो मेनी वेज टू डू दिस, राइट. कोई सही या गलत तरीका नहीं होता, बट वो ये है कि आपको थोड़ा सा एफर्ट लगाना पड़ता है कि जो चीजें मेरे पास पड़ी हैं उसी में मैं कैसे कर लूं, ताकि मुझे बाहर जाके अलग अलग जगहों से चीजें ना लानी पड़े. जैम सबके घर में होता है, दूध सबके घर में होता है, क्रीम अगर आपके पास नहीं भी है तो कोई मसला नहीं है, आप उसको फ्रूट्स के साथ या ड्राई फ्रूट्स के साथ टॉप कर सकते हैं. चीनी हर किसी के घर में होती है, इलायची हर किसी के घर में होती है, कस्टर्ड पाउडर हर किसी के घर. अगर कस्टर्ड पाउडर नहीं है आपके घर में तो आप कॉर्नस्टार्च डाल दीजिए और वनीला एसेंस डाल दीजिए. सेम थिंग, यू नो. Yeah, I remember one time my daughter was supposed to make something. Well, she had to buy like 50 things, like you just said. It's very complicated. किसी को जी नहीं चाहता कि मैं 10,000 चीजें खरीदूं और उसके बाद मेरी कोई चीज बने. You have to make it. Then वैसे ही पड़ा रहा, बाद में यूज नहीं किया. So it was like kind of a wasted thing. Yep. You continue using it, then it's a good thing. If you have a hobby or something. Yeah. It's actually a very good hobby to do this thing. I'm sure that a lot of young people are doing it. It's a hobby, but now there are a lot of apps where if you put in the name of an ingredient, let's say आपने किसी project के लिए अगर chocolate sauce खरीदा और वो बच गया, तो आजकल बहुत सारे ऐसे apps हैं that if you put in chocolate sauce, it's going to tell you recipes that use chocolate sauce. Also that. Yeah, so there are a lot of recipe apps that you can use nowadays which help you to do that. So ऐसे थोड़ा एक लता की फिर थोड़ी याद करते हैं. एक और गाना गा दो थोड़ा सा उसका. लता जी का कौन सा गाना गाएं? लता जी के तो हजारों गाने. आप कौन सा सुनना चाहेंगे ये बताइए. वो आपको अच्छा लगता है. अच्छा. Also, I want to tell everybody, just want to mention that I'm sure you must have heard about it this morning. When I woke up, there was a big in the news. So I want to pray for the people in Turkey and I think in Buffalo, some other place. They had the same day they had earthquakes. So we just want to give them a little, maybe 30 seconds. Just keep, to pray for them. I was really surprised this morning when that happened. Thank you. So keep them in mind. Let's pray for them. A lot of people have passed away because of that. So, but anyway, Nataji ka dekho, last year I can't believe that I had put that thing in the background and we had that program. But as I'm saying that this one is a talented person here. She sings. Khane ki to baat kali, lekin khane ki bhi baat dekho, you can, if you don't feel like cooking, what you do is pick up the phone or text Nupur. She's right here, and she will do that for you too. So aapko kuch fikr karne ki zarurat nahi hai. Like next week, I'm having some people over for my lunch group. So I thought, okay, I don't have to do anything. Nupur said, told me, Veena ji, aap guest jaise baithna, hum sab kaam karenge. You don't have to do anything. और जब हम जाएंगे तो किसी को किचन देख के पता नहीं चलेगा कि यहाँ कुछ हुआ था. So I said, not to worry about that. So that's a big, like a burden off my back, meaning, so I'm sure all of you have that kind of a situation. So please, Nupur ji ko call kijiye or bataye or whatever you want.
talk to her whatever you want. What kind of presentation you want. I customize all the menus. So चाहे आप non-veg lover है, चाहे vegetarian lover है, या Jain है, या कोई आपके dietary restrictions है, whether you're gluten-free, diabetic meals, whatever kind of customization you want, just give us a call. We bring everything to you on the day of the party. You can also pick it up in 3-4 locations in Manhattan. I can have it sent over there. So we have 4 central locations in Manhattan where you can pick up the food. I also do deliveries in Manhattan and Queens, and up to Long Island, up to exit 36. I don't go beyond that, but if you're ever thinking of hosting a party, और अगर आप मेरे खाने तक नहीं पहुंच सकते या हमारी catering नहीं ले सकते, so go on my website. There are masalas that you can order. There are ebooks that you can order. You can instantly download them and start cooking all those fantastic dishes in your own kitchen. आराम से आप कर सकते हैं. You can give them as gifts. Chai masala है, cardamom coffee masala है, stir fry blend कढ़ाई masala है. There is also टिक्का मसाला ब्लेंड है, उसमें सब कुछ किया हुआ है ना. आपको प्याज काटना है, ना टमाटर भूनना है, ना अदरक लहसुन डालना है, nothing. Everything is already there in that powdered masala. आप उसको डालिए, अपनी सब्जी या चिकन या फिश जो भी वो डालिए, थोड़ा सा कोई भी liquid डालिए, whether it's water, cream, coconut milk, whatever the case may be, and you're done. There is a tandoori masala for barbecue dishes. There is a southern masala for sambar kind of dishes. So you can definitely check it out. My website is queenscurrykitchen.com, and we are located in Queens, New York. Yeah, Queens. So मैंने कहा था last time, about a week ago, I think I had to take a big dish to a kitty party. Everybody brings something. So मेरा हमेशा miss, I don't know, for some reason I always get the fish. So that's one thing. I said I make it for myself, but make a big quantity क्या लेके जाऊँ? So मैं Nupur को call करी. मैं कहा Nupur, can you do it? She said no, Veena ji, don't worry. And that's so nice of her too. She came and everybody loved it. Tandoori fish. Yeah, we did a tandoori fish. That was your own marination which you made. और वो तंदूर में बना था, तो it was completely like it had that smoky flavor. Very nice. बहुत अच्छा था, and we really enjoyed it. So I just want to say that I am enjoying a lot of her cooking too. So next week we already made the plan for next week now. And Veena ji, also when your friend was sick, you had sent food for her. Yeah, that's okay. That's हाँ, तो one of her friends was sick, तो वीना जी ने उनके लिए खाना भिजवाया. So basically, अगर आप खाना नहीं भी बना सकते, but कोई आपके ज़हन में है, somebody you're thinking about, चाहे उनका birthday है, or you feel like an extra, home style meal can make their day, just reach out to me. I'm happy to bring the food to them. Also, recently, somebody's mother's birthday was on Saturday, and she had passed away last year. So this lady wanted to sponsor she wanted to donate some food. And I said, I have a couple of families that could really use this donation of food. And it's going to be cooked food. It's not ke dabbe pakla diye ke khud hi banao. Aisa nahi tha. So she told me what her budget was, and I told her these are the few families. You can pick whoever you want to sponsor. And one was a family of 7 people, another was a family of 3 people, and they got vegetarian Indian food. They thoroughly enjoyed it, and they sent their thanks to the donor. And she's a very well-known personality on Indian TV. Oh. She sent it to these 2 families. They don't know each other, but just because of the food, they are now connected. So अगर ऐसा भी कुछ है कि आप किसी loved one की memory में कुछ करना चाहते हैं, whether आप 100 लोगों को खाना खिलाना चाहते हैं या 2 लोगों को खाना खिलाना चाहते हैं, I also do those kind of things. So if anything comes up, आप कुछ करना चाहें तो definitely let me know. चाहे आपके घर में पूजा है, भजन कीर्तन, whatever, small gatherings, 20 people, 10 people, we are open for all of that stuff. You just have to check availability, and then खाना आपके पास पहुंच जाएगा. Tell me what kind of food you want. Is it vegetarian, mixed है, क्या है? She said Jain का है. Just give me a call and discuss whatever your needs are, and we are able to make whatever it is that we can cook. I'm benefiting from that. And so I think Nupur ji भी बहुत करते हैं. Nupur ji कह रही हो, Rama ji and her friends and all that. So we all we do that because it's convenient. Sometimes नहीं, जैसे अभी Nupur ने बोला, somebody passed away also. I said, Nupur, I don't know what to take. कहते don't worry, all vegetarian खाना होता है situation में. And मैं उनको ये सब चीजें देकर आऊंगी. And then they were very happy. Yes, आपकी family में भी recently जो आपके aunt गुजरे, तो तभी भी हमने किया था उनके बच्चों के. मैंने कहा I don't know, don't worry, I know exactly what to do. And they were very appreciative. And they loved the food. They were very, very appreciative. So ऐसी कुछ situation सबकी आ जाती है. Sometimes you're busy at work, you can't do it yourself. और आप खुद नहीं कर सकते, like physically आप नहीं कर सकते, या आपके other commitments होते हैं, आप नहीं कर सकते, but वो they are in your thoughts, and it's a very good way to let them know that you're thinking about them, Yeah. So that's what I did, and I, hopefully
I can do more of those things which I like to do. So here's Nupur, then that becomes easier for me. I don't have to think about going dropping. text kiya, chal bhaiya. Next kiya, that's it. So it goes from your heart and is made by Nupur's heart. She makes everything very, very full of love. You can feel it. So कल भी जैसे हमको दावत दी थी वहाँ पे, you know, it was just so much full of love and we had such a good time. Thank you, thank you. And वीर जी को भी बड़ा अच्छा लगा, उन्होंने भी खाया. Oh, thank you. So please, वीर जी ने इतने सारे flowers भेजे, chocolates भेजे, तो that's the least I could do. Told him that he was very happy about that. So like I said, you know, she's आपको किसी चीज की जरूरत हो तो बता. अभी मैं फिर कहती हूँ एक बारी जाने से पहले एक कुछ गा दो हमारे लिए. आपके लिए चलिए, आपके लिए एक ऐसा गाना गाती हूँ जो मुझे बहुत पसंद है. हालांकि लता जी के मुकाबले तो हम कहीं खड़े भी नहीं हो सकते, लेकिन फिर भी. आपकी मंजिल हूँ मैं, मेरी मंजिल आप हैं. आपकी मंजिल हूँ मैं, मेरी मंजिल आप हैं. क्यों मैं तूफान से डरूं, मेरा साहिल आप है. कोई तूफानों से कह दे, मिल गया साहिल मुझे. दिल की है धड़कन ठहर जा, मिल गई मंजिल मुझे. आपकी नजरों ने समझा, प्यार के काबिल मुझे. दिल की है धड़कन ठहर जा, मिल गई मंजिल मुझे. आपकी नजरों ने समझा. Wow. Everybody hope they're clapping at home. God, we can't hear you, but you should. Thank you, thank you. देखो मैं कैसे मिली थी Nupur, मैं just a little. I always say that to everybody. आप हमेशा ये वाकया याद करते हैं. मैं कभी भूलती नहीं, because it's such a भगवान का देखो कैसा तरीका. He guides you. We just have to listen to what he tells us. So I had gone to a very big exhibition. There were like 50 vendors and 1,000 people maybe. It was full. बहुत लोग थे. And I was going around and I mean looking around, and I think Nupur was near the door, very close to. Yes, India Festival था वो. India Festival था, and I just happened. August में हुआ करता था उस ज़माने. Smiling and looking at me, I said, you know what? I gotta go over there. The smile is so infectious, so inviting, and so nice. मैं उधर गई, हमने बात करी. तो मैं कहा मैं थोड़ा वुमेन्स फोरम का करती हूँ, मैं चाहती हूँ कि थोड़ा फैशन शो करें, कुछ करें. So we started talking, and she said, "मेरा number लो, मुझे call करो, मैं fashion में." Because she had fashion things, she has jewelry, she had earrings. I had clothing and jewelry back then. Jewelry. And she said, "Wow, a lot of that stuff is already gone, but I just have a few things left." I said, "Never mind, but I got some jewelry." And then we exchanged numbers. That was the best thing. From there, we hit it off, and we had a fashion show with her help. I mean, amazing. इतना बढ़िया सामान, इतनी अच्छी presentation. We had, I think, Halloween. The participants were everybody who was a member, so it's not like we didn't bring any fashion models. Right. आप सभी fashion models थे और आप सभी को हमने, we did rehearsals, we groomed them, we told them how to do the makeup, and everybody looked fabulous on the day off. It was quite a memorable fashion show. Halloween theme था, and इनकी बेटी ने भी डांस किया था. She danced, and I was really amazing. So we never look back. You know, I just feel like Veena ji, if you stay open to connections, you will find the right people. तो आप लोगों में से भी शायद इस वक्त कोई होगा जो सोच रहा है कि यार मेरे कोई यार दोस्त नहीं है, या मेरी लाइफ का एक नया फेज है, or you know, maybe you're an empty nester, maybe you're a new mother, और आपको लग रहा है कि you know my life is different, or maybe all of your friends are already married and you're thinking, well, I don't have anybody to talk to because we have nothing in common. I don't think we can stop making friends at any age. किसी भी उम्र में, किसी भी वक्त पर आप दोस्त बना सकते हैं. आपको खुद अपने आप को अवेलेबल करना पड़ता है दोस्ती के लिए, और फिर आपको सही लोग मिल ही जाते हैं. So you know, have the love in your heart. Yes. Judgment
don't gossip and don't bitch about people. Discuss creative ideas, discuss beautiful things. दुनिया बहुत खूबसूरत है और बहुत बड़ी है और अल्लाह ने बड़ी फुर्सत में बनाई है इसको, तो अच्छी चीजों पे फोकस कीजिए, सही लोग आपकी लाइफ में जरूर आएंगे, right? So saying, I always tell Nupur, I said, what if I didn't stop by? What if I didn't go here? I'm on the other side. What if I was there? So, but I was there. Also, right? बहुत सारे लोगों से मिलना हुआ, especially COVID के time when you started to, you know, do all the programs on Zoom. During that time, I met so many musical people, which is something that was so therapeutic for my soul. So, you know, अगर आपकी जिंदगी में कोई passion है, आप उसको follow करते हैं, कहीं ना कहीं सही लोग आपके साथ जुड़ना शुरू हो जाते हैं, but आपको उसको वक्त देना पड़ता है. I think that's really, really important. वैसे हम कहते हैं क्या pandemic आ गया, but pandemic में काफी अच्छी चीजें भी हुई हैं. Yeah, it was good. It was. This program started because of you. When I just talked to her. That was a Friday, and Nupur told me, Veena ji, क्या wait करना, Monday से शुरू करते हैं. मैं कहा आज तो Friday है, तो क्यों wait कर रहे हो? Start from Monday. So that's what we did. We started on Monday. And it's been going on almost 3 years now. Right, Veena ji, when we started, we did an art stream, but whatever it is, we started. जैसे भी था, हमने शुरू किया, and then you found out how to do it. So that's and we are 2.5+ years going. Yes. So thanks to you, and then you come today and इतना अच्छा हमको सिखाया. एक दिन पोएट्री का भी सेशन करेंगे और I want to do a workshop on Zoom. तो अगर कोई पोएट्री लिखना, पढ़ना, समझना ऐसा कुछ करना चाहता है तो definitely let us know in the comments. We are going to do a poetry workshop, and then I will encourage you to write and recite your own poetry. I'll also encourage you to recite किसी और का लिखा हुआ, उसको कैसे बेहतरीन तरीके से पढ़ें, diction को कैसे बेहतरीन बनाएं. We will talk about all those things. We talk about some very important poets who have shaped the future of Urdu and Hindi poetry. तो उनके बारे में बात करेंगे. बट बेसिकली ये बात करेंगे कि खुद भी कैसे लिखा जा सकता है, चाहे आप जर्नलिंग के लिए लिखना चाहते हैं या अपने स्किल को डेवलप करने के लिए लिखना चाहते हैं या सिर्फ अपने ख्यालों को कागज पर उतारने की कोशिश कर रहे हैं. इन सारी चीजों पे बात करेंगे. इट्स गोइंग टू बी अ 1-on-1 वर्कशॉप और उसमें सिर्फ 4 या 5 सीट्स होंगी. आई एम गोइंग टू डू इट थ्रू DDG. तो वीना जी एंड आई विल डिस्कस इट एंड वील पुट इट आउट देयर. बट इफ एनीबॉडी इज इंटरेस्टेड, यू वांट टू गेट ऑन द वेट लिस्ट, जस्ट पुट योर नेम देयर down in the comments below and we will reach out to you individually. आप दुनिया में कहीं से भी tune in कर सकते हैं. It will be live and it will be on Zoom, so you'll be sent a link. It will be a paid workshop. It will not be a free workshop. It will be a paid workshop. लेकिन काफी nominal होगा because I really want कि सबको encourage किया जाएगा, कुछ लिखें, कुछ अच्छा पढ़ें, कुछ अच्छा सुने. एक दूसरे का लिखा हुआ पढ़ के सुन के भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है. So we'll definitely do something on those lines. I think Rama is in, she said. Of course she's in. पोएट्री की बात हो ही नहीं सकती. Yeah. So that's it. I mean, folks, thank you so much for joining and in listening to Nupur and explaining such beautiful. I mean, she showed us how to make those beautiful. They're not that difficult, but you got to be a little creative, like she said. खुद अपना भी डालो, खुद सीखो, खुद इस एपिसोड को दोबारा देखो if you're not sure, and then you learn. कर लीजिए एपिसोड को ताकि बार-बार आप देख सकें अगले हफ्ते अगर आपको वाकई में बनाना हो. सारे इंस्ट्रक्शंस आंखों के सामने हो तो आपको नजर आएगा. You can always go back if you're a little bit late and go look at the recipes. They're very, very, very good. Variations we have. She's given you all the variations, and I'm sure all of you have the stuff at home. So just try it, And like I said, Valentine's is a few days away. एक बार practice कर लो तो उस दिन तो बना ही लोगे ना आप सब, right? बिल्कुल. And so thanks a lot. And then we're also planning a couple of other things. Having me. The pipeline में है. And you'll find out when the time comes. So thanks a lot for joining. Thank you, Nupur. Thank you for everybody. तहे दिल से आप सभी का शुक्रिया इस प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए. इस पेज को शेयर कीजिए, इस ग्रुप को शेयर कीजिए और इस प्रोग्राम को शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा मोहब्बत दीजिए ताकि वीना जी और उनके जितने भी पार्टिसिपेंट्स और गेस्ट को वो लेकर आती हैं उन सब की हौसला अफजाई हो और यूं ही वो आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन प्रोग्राम्स, बेहतरीन से बेहतरीन आइडियाज और जिंदगी को हसीन बनाने के कई अलग अलग तरीके और नुस्खे लेकर वो आपके सामने आती रहें. हफ्ते में 3 मरतबा आप इन्हें देख सकते हैं. मंडे, इज इट मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे, राइट वीना जी? Yes. Wednesday और Friday. वक्त रहेगा 10:30 EST. Facebook लाइव पर आप इन्हें देख सकते हैं, सुन सकते हैं. So please share it with your friends and family and join the DDG group, join the DDG page. Thank you so much for joining us today. अगली बार के लिए अल्लाह हाफिज. Take good care. सत श्री अकाल. Bye bye Veena ji. Thank you for having me.
Thank you. And then also this Wednesday, we're having a singer coming from India. Do join us. So we'll see you then. Thank you so much, everyone. Thank you so much, friends. Thank you. Thank you. Bye-bye. Bye-bye. Okay. Stop.